Dear students, Assalamu alaikum. I am Asif Mahmood. I am going to teach you physics. Please open your books at page 55. This is Unit 3 under the title Dynamics. Earlier, you have studied kinematics, the branch of physics which deals with the motion of an object without discussing the cause of motion. Now we will study the motion of an object and the cause of its motion as well. Please open the page 54. The branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics. सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की हरकत और इस हरकत के सबब या वजह का मुतालिया करते हैं. Here on page 57, please mark the definition of dynamics from paragraph 2, line number 3 to line number 6. Before discussing the motion, laws of motion and their applications, we should understand some terminologies regarding motion. These are force, inertia and momentum. The very first terminology is force. It is our observation that we use force during our different kinds of daily activities. We use force to open or close the door. We use force to change the direction of moving objects or to change the shape of objects as well. You can see the figures. Here is a batsman applying force through his bat to change the direction of the object. The object is moving ball. In next figure, a boy is pushing the wall. He is trying to move the wall, but due to his force, the wall cannot be moved, but it tends to move. In next figure, a goalkeeper is stopping the ball, that is a moving object. He is using force to stop the moving object. Now we can define force as a force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि फ़ोर्स हरकत देती है या हरकत देने की कोशिश करती है, हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है. फ़ोर्स किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है. Force is a vector quantity. Its SI unit is Newton and it is denoted by capital N. The next term which we will discuss is inertia. As we know that we can easily move light objects while it is difficult to move heavy objects. This is due to the property of matter which is called inertia. Newton related the inertia of a body with its mass. Greater is the mass of a body, greater is its inertia. Here is the definition of inertia.
Inertia of a body is the property due to which it resists any change in its state of rest or motion. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जिस्म का इनर्शिया उसकी एक प्रॉपर्टी यानी खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट या मोशन की हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। इनर्शिया को समझने के लिए हम एक सादा सा तजर्बा करते हैं। एक गिलास लें और इसको एक गत्ते या कार्डबोर्ड के टुकड़े के साथ ढाँप दें। इसके ऊपर एक कॉइन यानी सिक्का रखें। आप कार्ड को अपनी उंगली की मदद से ज़रब लगाएं। आप देखेंगे कि कार्ड अपनी जगह से दूर जा गिरेगा जबकि सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों है? दरअसल सिक्का इनर्शिया की वजह से अपनी रेस्ट की हालत को तब्दील नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो गिलास में गिर गया है। Dear students, the last topic for today is momentum. Momentum of a body is the quality of motion it possesses due to its mass and velocity. यानी किसी भी जिस्म का मोमेंटम दरअसल मोशन की वो मिकदार है जो इसके मैस और वेलोसिटी की वजह से है। यानी मैस और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। If the momentum is denoted by capital P, mass by M and velocity by V, then mathematically momentum can be expressed as P is equal to mv. Momentum is a vector quantity. Its SI unit is kilogram meter per second. Today we have learned about dynamics, force, inertia and momentum. Dear students, now you will memorize these questions. Define dynamics. Define force. What is inertia? Define momentum. Write its unit. Dear students, उम्मीद है आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इन सवालात को याद कर लीजिए और सेल्फ टेस्ट के ज़रिए अपने याद किए हुए सबक का जायज़ा भी ले लीजिए। उम्मीद है आप भरपूर तवज्जो देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।